यानी हमने कल के सारी बात देखी। Assalamualaikum. The topic of today's presentation is cranial nerves associated with eye. Specific learning outcomes. By the end of this presentation, audience will be able to, we will only be discussing oculomotor nerve today, rest of the nerves will be covered in next other presentations. Describe the pathway of oculomotor nerve, enlist different causes of oculomotor nerve palsy, identify signs of third nerve palsy, describe the management of third nerve palsy. So we all know that oculomotor nerve is the third cranial nerve. What structures are supplied by the oculomotor nerve? So first we are going to discuss the signs of third nerve paralysis so that it gets easy and we'll be discussing the causes later on. First, the patient will present with ptosis. There's going to be weakness of the levator muscle due to which ptosis occurs. Then there's going to be abduction and depression in primary position due to unopposed action of lateral rectus and superior oblique muscles. There's going to be normal abduction. Abduction is going to be limited because the medial rectus is involved. Then there's going to be limited elevation because of the weakness of the superior rectus and inferior oblique muscles. And there's going to be dilated pupil and defective accommodation because of the parasympathetic palsy. This is a patient of oculomotor nerve palsy. We can see ptosis in that eye, and in this we can see the down and out position of the eyeball. This is another patient of oculomotor nerve palsy. We can see in the right eye there is ptosis and there is down and out position of the eyeball. In this patient there is limited, in this picture there is limited adduction. However, the abduction is normal. First of all, to understand the entire topic, it is very important to understand the pathway. I'll be writing the pathway here. This is the brain stem, midbrain hair. This is superior colliculus, inferior colliculus. Then there is the cerebellum, midbrain, pons, medulla. The oculomotor nerve nucleus starts around the periaqueductal gray matter. This is the motor nucleus and this is the Ebbinga-Westphal, which is the parasympathetic nucleus. Fibers, so this is the nucleus. सबसे पहला है वो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, वो मिड ब्रेन में सुपीरियर कोलिक्युलस के लेवल पे प्रेजेंट है. इसके बाद फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ द न्यूक्लियाई एंड दे फॉर्म द फेसिकुलस. उसके बाद मिड ब्रेन से बाहर आती हैं फाइबर्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द बेसिलर. Then the nerve goes in the cavernous sinus, lateral wall of the cavernous sinus. Before exiting the lateral wall of the cavernous sinus, the nerve divides into upper and lower branch. After that, it passes through the superior orbital fissure and enters the orbit. So this is the entire pathway of the oculomotor nerve. We'll be discussing causes according to the areas involved. This is also a picture showing the same thing which I drew on the board. First there is the oculomotor nucleus, then there is the, so the one thing that we have to see that the fasciculus is passing through the red nucleus, and along with that here there is all the motor fibers, corticospinal tracts and all the motor pathway is going through this part of the midbrain. We have to see the anatomy right now, and later on we'll be discussing the pathology. Then after that we can see that the fasciculus exits the midbrain, and this part is the basilar part of the oculomotor nerve. Then after that this is the cavernous sinus, and the nerve divides into its different smaller branches and supplies the eyeball ultimately after passing through the superior orbital fissure and its intraorbital route. So first of all, we'll discuss the pathway, the pathology which is associated with the nuclear complex.
the midbrain में superior colliculus के level पे we have the nuclear complex. The nuclear complex is subdivided into different small subnuclei. First we have the levator subnucleus, which if there is a disease in the levator subnucleus, there is going to be bilateral ptosis because only one nucleus supplies both the levator muscles. Then after that we have superior rectus subnuclei. Superior rectus subnuclei का अगर एक side का involve होगा तो other side of the superior rectus involve होगा क्योंकि इसकी contralateral supply होती है. इसके अलावा मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक सबन्यूक्लियाई के लीजन्स जो है अनकॉमन है बट वो एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और इप्सिलेटरल होते हैं. देन देयर इज वन ये जो सबन्यूक्लियाई है मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक सबन्यूक्लियाई, इसकी लीजन वैसे अनकॉमन है. देयर इज वन लीजन व्हिच इज कॉल्ड वेबिनो वॉल्ड आई बाइलेटरल इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया. इसमें एक्सियोट्रोपिया होता है, डिफेक्टिव कन्वर्जेंस होती है और एडक्शन होती है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑल थ्री मसल्स एंड इट अकर्स बिकॉज ऑफ द इंफार्क्शन ऑफ द पेयर्ड मीडियल रेक्टस सबन्यूक्लियस. This is a patient who has Webenos, and we can see in primary position both eyes are in exotropia. The causes can be vascular, primary tumors or metastasis. Then for the fasciculus, we have to see different syndromes. Okay, first we'll discuss Benedict syndrome. In Benedict syndrome, this part of the midbrain gets involved, and we can see that this part is getting involved means the red nucleus along with the oculomotor nerve is getting involved. The motor part is involved, but in Weber syndrome, we can see that most of the motor part is involved. So that is the distinguishing feature between Benedict and Weber syndrome. In Benedict syndrome, there is going to be hemiataxia, means there is going to be difficulty in coordination due to involvement of the red nucleus. However, in Weber, there is going to be hemiparesis and motor involvement is going to be more than Benedict. Ipsilateral third nerve palsy दोनों में होगी. Then other than that, we have Nossonadi syndrome, which is ipsilateral third nerve, and there is going to be cerebellar ataxia with it. And Claude syndrome is a combination of Benedict and Nossonadi. The causes are similar to nuclear lesions like ischemia and vascular and tumor and mets, but since it is the nerve fibers है तो demyelination भी हो सकती है. Then next we have basilar. Basilar part ये वाला है. It is surrounded by lots of arteries. सबसे पहले नीचे से vertebral आती है, vertebral basilar branch देती है और basilar से फिर posterior communicating आती है and there is posterior cerebral also. अब इस जगह पे posterior communicating artery का जो aneurysm है that is going to be the causative. That's going to be the cause. और जितनी भी isolated third nerve palsies होती हैं वो सारी basilar होती हैं. Firstly, there is going to be the most important cause is aneurysm. कोई भी oculomotor nerve palsy का patient आए, सबसे पहले हमने obviously examination सारी करनी है, but we have to see if it's pupil involving or not. If it is pupil involving, so we have to do a detailed examination, and because it is an emergency, and we have to deal with the aneurysm as soon as possible. The patient is going to present with acute, painful pupil involving third nerve palsy, and also in head trauma, when there is subdural or extradural hematoma, it causes downward herniation of the temporal lobe. You can see in this picture that there is an extradural hematoma, and this is the uncus where there is prolapsing temporal lobe, and it is putting pressure on the basilar part of the oculomotor nerve. There is one more thing here that we have to see, that when in the basilar part of the oculomotor nerve, जो parasympathetic fibers होते हैं वो outer में होते हैं और जो motor होते हैं वो inside होते हैं. इसीलिए जो भी compressive lesions होंगे उसमें पहले pupil involve होगा और motor involvement बाद में होगी. लेकिन जो nerve जो blood supply होती है nerves की, उनकी जो end vessels होती हैं वो पहले जाती है motor पे, तो जो ischemic वाला होगा उसमें motor involvement पहले होगी और pupil बाद में involve होगा. And inflammation can also cause it. Ischemia and microvascular causes are also there.
Then next we have the intracavernous. Intracavernous we all know that lateral wall of the cavernous sinus से जा रहा होता है, six cranial nerve through the center जाता है और बाकी सारी उसकी wall से जाती है. तो अगर intracavernous lesions होंगे तो it is going to be associated with other nerve palsy also. साइंस इसमें होंगे थर्ड नर्व पाल्सी के, फोर्थ नर्व पाल्सी के, सिक्स नर्व पाल्सी के भी साइंस होंगे एंड ट्राइजेमिनल नर्व के फर्स्ट डिवीजन के भी सारे साइंस होंगे. Causes can be diabetes, pituitary apoplexy. Pituitary apoplexy basically is either hemorrhagic, there's a hemorrhage inside the pituitary gland, or there is infarction of the pituitary gland, and there's also one syndrome, Sheehan syndrome, in which the blood supply of the pituitary gland gets compromised, and then it ultimately affects the pituitary, and since it is lying just above the nerve, it can cause symptoms of oculomotor nerve injury. इसके अलावा कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला है, एन्यूरिज्म है, मेनिंजियोमा है. Then next comes to intraorbital. Intraorbital आते वक्त नर्व डिवाइड हो जाती है सुपीरियर और इंफीरियर डिवीजन में. ट्रॉमेटिक कॉजेज और वैस्कुलर कॉजेज आर मोर कॉमन हियर. Then after damage, obviously we have to see if it's regenerating. So aberrant regeneration होती है, but only in causes of trauma and compression. Ischemic के causes में there is no regeneration seen. And after regeneration, obviously regeneration bizarre से हो सकती है, तो bizarre effects आ जाते हैं ocular motility में. And for that we have a syndrome which is pseudo-Von Graffi phenomena. It misdirected regenerating axons होते हैं जो re-innervate कर देते हैं incorrect extraocular muscles को. And इसमें ये होता है कि elevation होती है upper leg की जब patient adduct करता है और depress करता है. And it can involve the pupil also. We can see in this picture that the patient had left third nerve palsy and then he had aberrant regeneration. Lid elevation हो रही है on lid elevation on adduction and depression. Pseudo-Von Graffi. Then there can be episodic third nerve palsy in which the symptoms, periodic symptoms आते हैं third nerve palsy के, and then उसकी resolution हो जाती है थोड़े time बाद. It can be idiopathic, it can be due to migraine, it can be due to compression, ischemia, and it can also be due to alterations in the intracranial pressure. Investigations, we obviously have to see the vascular risk factors, vasculitis है, GCA के कुछ symptoms आ रहे हैं तो उसको evaluate करेंगे. इसके अलावा most common जो ischemia है उसको देखेंगे, diabetes का सारा workup, systemic hypertension का सारा workup कराएंगे, and urgent CT angiography is needed if there is pupil involving third nerve palsy. It shows signs of, and for that we have to see the signs of expanding aneurysm, which are marked pupillary involvement and milder motility dysfunction and partial ptosis. इसमें मैंने बताया कि पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स बाहर की तरफ होते हैं नर्व में और मोटर अंदर होते हैं. पहले पैरासिम्पैथेटिक साइंस आते हैं और इसीलिए we have to do an urgent CT the moment we see such signs. MRI brain and orbits with venography, stroke के लिए, ट्यूमर के लिए, cavernous sinus और ऑर्बिटल एपेक्स लीजन. ऑर्बिटल एपेक्स का लीजन होता है थोलोसा हंट सिंड्रोम. उसमें इन्फ्लेमेशन होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की और एंड ऑल द नर्व्स दैट आर पासिंग थ्रू दैट फिशर गेट्स इन्वॉल्व्ड. ट्रीटमेंट इस्केमिया की वजह से है तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज ऑब्जर्व. अंडरलाइन जितनी भी सिस्टमिक डायबिटीज हाइपरटेंशन है इनकी ट्रीटमेंट हमने देनी है, बट साइमल्टेनियसली वी हैव टू ऑब्जर्व. Full resolution occurs in 12 weeks and we can advise prisms meanwhile. Fresnel prisms के जो stickers होते हैं वहाँ पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं. For surgical हमने वेट करना होता है एटलीस्ट 6 months, 6 to 12 months हम वेट करते हैं सर्जिकल जब तक स्टेबिलिटी ना आ जाए. उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है एक तो स्ट्रैबिस्मस सर्जरी कर लेते हैं, बट उसके लिए वी हैव टू जो मेन गोल होता है दैट प्राइमरी गेज में और रीडिंग पोजिशन में एक अलाइनमेंट पेशेंट को हमने प्रोवाइड करनी होती है. इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. And then we have ptosis surgery जो हम कर सकते हैं. So the take-home message is the function of oculomotor nerve that is supplying the extraocular muscles along with intrinsic muscles of the eye causes pupillary constriction and lens accommodation, and the pathway begins in the midbrain all the way till the orbit, and we have to see उसके साइंस के हिसाब से भी आप इवैल्यूएट के कौन से लेवल पे कॉज हो सकता है. टेस्टिंग के लिए वी गो टू एच पैटर्न चेक करते हैं, टोसिस देखते हैं, अकोमोडेशन देखते हैं और पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स देखते हैं. These are the references. We'll cover the MCQs after we have
cover the abducent and the other nerves also. Thank you. इन्वॉल्वमेंट होगी थर्ड नर्व की रेड न्यूक्लियस के लेवल पे तो वो बेनिडिक्ट होगी। तो एंटीरियरली इंटरनल कैप्सूल है उस पे अगर अफेक्ट होगा और थर्ड नर्व होगा तो वेबर होगा, साथ कंट्रालैटरल हैंगिंग पीछे होगा। सो ये याद रखने के लिए कोई निमोनिक आप याद है। दूसरा, द थर्ड नर्व पासेस थ्रू superior orbital fissure within zonule circle of it or outside? Within, okay. Outside कौन सी नर्व्स होती हैं? उसको याद रखेगा कि LFT, गुड। तो LFT बाहर है, बाकी सारी अंदर है। ओके, सो द प्यूपल इज इन्वॉल्व इन 90% ऑफ द सर्जिकल कॉजेज। वो सुपरफिशियल फाइबर्स हैं, इनवेरिएबली अगर ऑप्टिक नर्व को कोई चीज़ प्रेस कर रही है तो इट विल कॉज प्यूपल इन्वॉल्विंग थर्ड नर्व पाल्सी। While medical causes in 90% of the cases are pupil sparing. So कोई 100% नहीं है, थोड़ा सा मार्जिन है। ये आप ज़हन में रखें कि प्यूपल चेक करना ज़रूरी है थर्ड नर्व पाल्सी में। एंड द टोसिस इन थर्ड नर्व पाल्सी इज कंप्लीट। जब आप लिखते हैं ना टोसिस, वाई टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर में जो होता है वो माइल्ड होता है, पार्शल होता है। थर्ड नर्व पाल्सी में कंप्लीट होता है, टोटल होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ अ यंग पेशेंट comes with third nerve palsy, what will you do? Will you do any investigation? You will observe the patient or do any investigation? Anybody? Investigation करेंगे? क्या करेंगे? सर पहले उसका प्यूपिल की रिएक्शन चेक करेंगे। ठीक है, प्यूपल डायलेटेड है, नॉन रिएक्टिंग। सो अगर तो प्यूपिल इन्वॉल्व है तो फिर हम उसकी इमेजिंग की तरफ क्या जाएंगे। इमेजिंग करें? कंप्रेसर हो CT, जाए। MRI और एनीथिंग एल्स? MRI क्यों? सॉफ्ट टिश्यू देख रहे हैं आप, क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं? जो सॉफ्ट गुड। सो एन्यूरिज्म आप ध्यान में रखें। यंग पेशेंट थर्ड नर्व के साथ आए तो एन्यूरिज्म इज द मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रोबेबल। तो उसके लिए एंजियोग्राफी कराएंगे, CT और MRI। सो खाली CT और MRI कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो another patient 50-year-old with diabetes and hypertension for a long time comes with third nerve palsy. Will you do any investigation? फर्स्ट एपिसोड में भी ऑब्जर्व फॉर 3 Observe. So when the cause is known, the long-standing diabetes or hypertension and 50 plus age, we will not do any investigation. We will not ask for CT or MRI or angiography. Right? So the age of presentation is very important. Now coming to what surgery would you do? No, the clinical signs. See, the lateral rectus is functioning and the superior oblique is functioning. The rest of the muscles are not. So the eye is in abducted and down. So how to check whether the superior oblique is functioning or not? You want to ensure that the two nerves are intact. Abduction you will check by asking the patient ipsilateral gaze and इंटॉर्शन होती है कब? when you want to activate the superior oblique by asking the patient to look down in reducted position. So the patient cannot look down, instead the eyeball will intort. So how can you detect intorsion? How to observe intorsion? कैसे देखते हैं इंटॉर्शन हो रही कि नहीं हो रही? सिर्फ तो एक स्लिट लैम्प पे भी हम देख लेंगे ग्लोब की मूवमेंट। Good. So you see one blood vessel on the globe and then ask the patient to look down. Patient when moves down the eye, that blood vessel will go in towards the nasal side. So this is intorsion.
See, now this is the problem when you are going to crack the third nerve palsy. The lateral rectus and the superior oblique are constantly functioning, and they are abducting and depressing the eye. The conventional resection can be done in mild to moderate cases of third nerve paresis when there is some function in the medial and lateral recti. See, but if the muscle power is completely lost, you have to do an extra resection. Maybe in paralytic squint, instead of conventional 6-8 millimeter, 6 for medial and 8 for lateral, you will have to do double, maybe 10 millimeter medial rectus resection and 15 millimeter lateral rectus resection. See, with supramaximal resection of the ocular muscle, sometimes the alignment is still not achieved. So what will you do? Eye tends to go out, abduction, lateral rectus is functioning. So what you do, you disinsert the lateral rectus and attach it to the orbital wall. So you knock out the lateral rectus, so the eye is not abducted. Some persons, they anchor the medial rectus to the orbital wall, medial orbital wall, so that the eyeball is not abducted. So our aim in third nerve palsy is to achieve alignment in the primary position. That's all. We are not interested in achieving range of movement of the eyeball. See, and we always do squint surgery first and ptosis surgery later on. Otherwise, the patient will develop diplopia or cosmetic appearance भी ठीक नहीं होगी. So always do squint surgery. मैं पेशेंट का लिड उठा के दिखाता हूँ, देखो ये इस तरह तुम्हारी आंख बाहर गई है. मैं सिर्फ अगर टोसिस की सर्जरी कर दूंगा तो ये और बुरी लगेगी. So पहले हम स्क्विंट सर्जरी करेंगे और फिर हम टोसिस सर्जरी. So this is the rule. Okay. Any comment? Oculomotor nerve. ठीक है, oculo and motor दो nerves हैं. So it is the main supply of the globe. जो motor supply है वो globe की. तो normally हमें देखें vision के लिए क्या चीज़ चाहिए? We need to look straight और या करीब का काम करें. So ये सारे muscles जो हैं they are supplied by the third nerve. तो जब इसी तरह levator palpebris superior lid की elevation भी ज़रूरी है देखने के लिए. सो इन कॉम्बिनेशन ये सारे मसल जो है एक्ट करते हैं और एब्ड्यूसेंट की कम ज़रूरत पड़ती है वाइल ओनली फॉर लुकिंग डाउन और जो सुपीरियर ऑब्लिक है वो वाइल लुकिंग टुवर्ड्स द नोज जो हमें चाहिए. तो मेन सप्लाई में ये ऑक्यूलो मोटर ठीक है ना, यही है कि सारे के सारे मसल सवाए दो के बाकी सब जिसमें अकोमोडेशन भी शामिल है ठीक है नियर के लिए एवरी फंक्शन इज सप्लाइड बाय. और इस थर्ड नर्व का एसोसिएशन जो है अच्छा जब इसमें होता है तो पेशेंट की कंप्लेंट क्या होता है? थर्ड नर्व का वाला जो पेशेंट आता है वो आपके साथ किन कंप्लेंट? अच्छा मुझे बताएं अगर डिप्लोपिया होता है कि इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाकी डिप्लोपिया इज वेरी मार्क्ड इन lateral rectus palsy and superior oblique palsy. लेकिन third nerve palsy में because the lid is totally totic, so इसलिए उसको एक आंख से नज़र नहीं आ रहा तो डिप्लोपिया की कंप्लेंट यूजुअली नहीं होती unless it is incomplete. अगर प्रोसेस कंप्लीट पार्शियल है तो फिर होगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट देयर. अब इसमें एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो पॉइंट ऑफ व्यू से टोक्स का जो आता है स्पेसिफिकेशन उसमें आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि जी शो अस कि जी आप आई से रिलेटेड जितनी क्रेनियल नर्व्स हैं उसको किस तरह चेक करेंगे. तो उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ से तो आप मूवमेंट से कर लेंगे. सेकंड के लिए क्या फंक्शन है? ठीक है ना, विजुअल एक्यूटी, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, कलर, RAPD. तो जब प्यूपल आप चेक करेंगे तो उसमें RAPD भी इंक्लूड हो गया और इधर से. और उसके बाद सिक्स नर्व के लिए जस्ट लेटरल मूवमेंट है आपकी.
और 7th नर्व भी आई से रिलेटेड है। सो उसके लिए जो आपने सारे, तो ये आपके पास सिर्फ 10 मिनट का स्टेशन होता है। उस 10 मिनट में आपने ये सारी जो आई रिलेटेड ब्रेन नर्व्स हैं इनका एग्जामिनेशन करके दिखाना होता है। सो यू हैव टू मेक अ स्पीड और प्रोसेस इस तरह कि आप कोई चीज़ मिस भी ना करें एंड विद इन स्पेसिफाइड टाइम यू शुड बी एबल टू करेक्ट। फिर इसके बाद सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको उसकी पेरिफेरल नर्व्स भी देखनी होती है, बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ या तो ऐसा पेशेंट है तो उसमें पेरिफेरल नर्व्स को भी आपको थोड़ा, तो इसलिए अपने स्कीम इस तरह से डिवाइस करें कि आप जल्दी जल्दी जो है वो सारा कर लें, इंक्लूडिंग योर पेरिफेरल नर्व।